हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ एलन वेक 2। तो गाइस इस गेम को लेके जो मेरी एक्साइटमेंट है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे है बिकॉज जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था गाइस यकीन मानो इसका जो ग्राफिक्स हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट जेन वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इसको प्ले करते हैं एंड लेट्स डू दिस। Back to the beginning. बैक टू द बिगिनिंग। ओके हमारा गेम यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। Expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. All right. स्टार्टिंग में आई थिंक कट सीन आने वाला है कोई, उसके बाद हमारी स्टोरी कंटिन्यू होगी। In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Okay. नाइस गाइस, स्टार्टिंग देख रहे हो गाइस कितनी अमेजिंग हुई है इस गेम की। ओह वेट, ये कौन है भाई? लॉस्ट इट्स डार्क। वेट अ मिनट यार, ये कौन है? आई नीड, क्या चाहिए भाई तुझे? शो मी करते करते पूरे कपड़े उतार रखे इसने भाई। एक मिनट वेट, हाँ नहीं मुझे लगा नहीं सच में मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ इसको, लग रहा है मैं कंट्रोल करने वाला हूँ इसे। व्हाट अमेजिंग यार गाइस, मुझे बिलीव नहीं हो रहा मेरा पीसी ये हैंडल कर पा रहा है। ये देखो कितना स्मूथ चल रहा है भाई गेम, अल्ट्रा ग्राफिक्स में। ये मैक्स सेटिंग मैंने कर रखी है इस गेम की। मुझे समझ नहीं आ रही हमारी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई है। मीन्स ये है कौन? ये इसका चेहरा भी नहीं देख सकता मैं। एक मिनट रुको, लेट्स गो। सामने कोई है? कैन यू हियर मी? भाई कोई तो है सामने। मैं इनको दिखा नहीं क्या मैं? भाई ये तो चले गए। ओके यहाँ पे दो रास्ते हैं क्या? नहीं ये वाला रास्ता तो बंद है। आई थिंक मुझे सामने की तरफ ही जा रहा है। लेट्स गो। जैसे अजीब सी साउंड आ रहा है भाई सामने से। ये है क्या भाई? हवा कितनी तेज चल रही है यार, पेड़ों से पता लग रही है हवा। ओके एक मिनट रुको, ये तो रास्ता बंद है सामने। आई थिंक मुझे इस साइड जाना है। वो डरा दिया भाई इसने तो मुझे। ये क्या था यार? स्क्रीन को क्या हो रहा है भाई? ये किसी की आवाज आ रही है मुझे सामने से। यार इस गेम में जंप स्केयर बहुत है भाई। जितना मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ मुझे कोई आवाज़ आ रही है, जैसे कोई मंदिर वगैरह नहीं बढ़ता है वैसी कोई आवाज़ आ रही है मुझे सामने से। वापस लेक पे जाना है क्या? कोई हेल्प करने आया क्या मेरी यहाँ पे? भाई इतने सारे लोगों के हाथ में नाइफ है भाई। भागो भाई वापस। पीछे भाई, पीछे से भी आ गई है।
ये क्या कर भाई, मार दिया इसको। द कल्ट ऑफ द वर्ल्ड। कुछ मास्क पहन रखा है इस मुंह पे इन्होंने। वी आर द कल्ट ऑफ द ट्री। गया भाई, बस भाई सीधा उसके चेस्ट पे उन्होंने नाइफ स्टैप कर दिया ब्रो। भाई इसका दिल बाहर निकाल दिया इन्होंने। ये कुछ इंसान आए थे यहाँ पे, उनका चेहरा दिखा था हल्का सा लाइट में, स्पॉटलाइट में। यार उसका पूरा दिल बाहर निकाल दिया इन लोगों ने। नाइस गाय। जो स्टार्टिंग गेम की हुई है काफ़ी इम्प्रेसिव है एंड भाई ग्राफिक ने सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेस करा है। Amazing, yeah, amazing graphics. This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Say hi to Casey. I will. Bye, kiddo. Okay, I think Casey इसी का नाम है शायद। Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. तो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ इन लोगों को। It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Okay, हम लोग शायद लेक के पास पहुंच चुके हैं जहाँ पे शायद मर्डर हुआ था स्टार्टिंग में। Cauldron Lake. अब मुझे स्टोरी समझ में आ रही थोड़ी। Time to get to work. इस गेम में ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी कि हमें कट सीन दिखाया गया, यानी मर्डर कैसे हुआ है उसका एवरीथिंग, सब चीज़ हमें मतलब बताया गया है इस गेम में स्टार्टिंग में। तो ये चीज़ काफ़ी अमेजिंग है इस गेम की। वाओ। रिटर्न वन इनविटेशन। ऑलराइट, लेट्स गो। Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. ओके, यहाँ पे कुछ मैप I है should क्या? take a look at that map. ओके, मुझे मैप देखना है। द मैप डिस्प्लेस की लोकेशंस इन द एरिया। ओके, लेट्स गो बैक। ओके, केसी कहाँ चला गया? ओके, सामने खड़ा है वो। व्हाट इज इट? Hey, over here. यहाँ पे कोई है? ओके, ये कोई पुलिस वाला लग रहा है मुझे Hey कोई। there. और It's हम लोग Casey, FBI right? से हैं। ओके, Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? एंडरसन। ओके, हमारा नाम एंडरसन है। Saga I'm in Anderson. charge here. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that,
Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? I could use a briefing, any witness to the crime. Okay. This is nice कि हमें ऑप्शन मिलता है चूज करने के लिए. फर्स्ट वाले पे जाऊंगा. I could use a briefing. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Any witness to the crime? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Okay. Let's take a look at the body. Okay. हमें body देखनी है. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Okay. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Okay. हमें शायद crouch करके इस fence के through जाना है. Let's go. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the एक clues मिनट को यहाँ पे clearly. कुछ है क्या? ओके नहीं. शायद सनलाइट आ रही है वहाँ से. मुझे लगा कुछ चमकता हुआ कुछ दिख रहा था मुझे शायद. आई थिंक मुझे सामने की तरफ जाना है. I need to think through the facts of the case. You can access the caseboard inside the mind place. Press tab. What? ये The कहाँ पे आ mind गया हम लोग? place. The mind place. My version of the mind palace technique. Mind To palace sift through technique. clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Okay, case board. Okay, ये हमारा शायद माइंड प्लेस है. यानी जो माइंड में एक प्लेस होती है ना जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे FBI वाले, तो उनके माइंड में कुछ आइडियाज़ वगैरह जो भी रहते हैं केस सॉल्व करने के लिए, वो समझ लो आप ये सराउंडिंग्स जितने भी है ये हमारा वही माइंड है, समझ लो. यहाँ पे हम लोग केस वगैरह सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने फोटोज़ लगा रखे हैं. ओके Everything we know about the previous murders. ओके, Worth taking another look. लेट्स चेक इट. ओके, you can use mouse arrow up and down to zoom. Okay, let's go. You are now free to navigate the caseboard or leave by pressing escape. Okay, leave कर देता हूँ मैं और वापस चलते हैं हम See, लोग. you're already hard at work, Visiting the Anderson. mindset does not pause the game, so Close to mindful of the cracking it. nearby We're threats. just getting Okay, started. let's Let's head go. down the hill to the crime scene. Crime scene में चलते हैं हम लोग डायरेक्ट Hey, अब यहाँ से. Casey, you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. ओह एक मिनट को यहाँ पे कुछ है. मिरर पीक. व्हाट इज इट? मिरर पीक. द माइटी माउंटेन इन द डिस्टेंस इज नो लॉन्गर दैन मिरर पीक द आइकनिक लैंडमार्क. ओके, यहाँ के एरिया के बारे में लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है. बाकी आई थिंक इस माउंटेन के बारे में बात हो रही है क्या, पता नहीं, छोड़ो, चलते हैं आगे. Fucking nature.
gives me a headache. There's too much sky. एक मिनट, वो यहाँ पे भी तो एक रास्ता जा रहा है। क्या मैं देख के आ सकता हूँ क्या? तो जब तक ये यहीं पे खड़ा है मैं देख कर आता हूँ उस साइड पे क्या है। ओ भाई, एक और रास्ता जा रहा है इस साइड से, पहले इधर चलते हैं। check something out. Be right back. Got it. Is that a kid's lunchbox? किड्स लंच An बॉक्स। Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Okay, my dad used to say, when the going gets tough, the tough get going. पता नहीं क्या लिखा है यार ये। बाकी ये कुछ पेपर्स मिले हैं मुझे, यहाँ से मैंने उठा लिया। आई डोंट नो इसका कहाँ यूज़ होने वाला है। यहाँ पे लंच बॉक्स कौन रखेगा? वेपन अपग्रेड। ओके, मैं वेपन भी अपग्रेड कर सकता हूँ यहाँ पे, मैंने चेक नहीं करा। ओके, यहाँ पे पिस्टल है शायद। अगेन एंड अगेन मोर बुलेट्स, अनदर हेडशॉट। ओके, यहाँ पे 18 करके कुछ, ये जो मुझे स्क्रिप्ट्स मिली थी शायद इन्हीं सब से मुझे शायद अपग्रेड कर पाएंगे हम लोग, जो कि हमें लंच बॉक्स से मिलेगा। आई थिंक सो, मुझे नहीं पता, यही शायद मुझे मिला हो। बाकी हमारे पास 2 हैं तो अभी हम लोग अपग्रेड नहीं कर सकते, तो जल्दी से बैक चलते हैं। ओके, लेट्स गो एंड वापस चलते हैं उसके पास, केसी के पास। तो कहाँ पे था? यहीं पे था ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आगे से रास्ता बंद है। ओके, हमें राइट तरफ जाना है। ओके Still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. ओके, लेट्स गो। Not a bad place to get murdered. If Not getting a back bad to place to nature get is your murdered. thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. बारिश हो रही है क्या? The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. ओके, हम लोग शायद लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। इसने बताया था कोई जनरल स्टोर होगा यहाँ पे। How much clearer can I make it, Mulligan? ओके, सामने एक स्टोर है और वो शायद बैठा हुआ है सामने की तरफ ही। लेट्स गो। Hey! हेलो। Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show ओके, you. स्टोर के पीछे है बॉडी। लेट्स गो। So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? ओके गाइस, सामने ही बॉडी पड़ी हुई है गाइस, टेबल पे जहाँ पे उसको मारा था वहीं पे पड़ी हुई है बॉडी। अब पोस्टमार्टम करना होगा शायद हमें इसका। यहाँ से We चलते हैं। didn't ओके, touch nothing, you know. ये बॉडी पड़ी है यहाँ पे। Procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? ओके, हमें चेक करना है क्या जो प्रीवियस मर्डर्स हुए थे, जो हमने पोस्टमार्टम जिनकी करी थी, Step क्या वो 1. सिमिलर है? Examine the तो लेट्स corpse. करते हैं हम लोग। तो लेट्स चेक इट। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं इसको, बॉडी को। Body is Okay. positioned on the table. ओके, Ritualistic. केस बोर्ड में जाना है दोबारा हमें। काउंट्रोन लेक मर्डर सीन। ओके, ये हमें शायद केस बोर्ड में लगाना है। Another body turns up just as we arrive in town. ओके, Coincidence? इन्वेस्टिगेट द क्राइम सीन। ओके, हमें क्राइम सीन में वापस जाना है, तो लेट्स गो। ऑलराइट, और भी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है यहाँ पे। Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. ऑलराइट, इसके हाथों पे स्ट्रैप्स बांधे हुए। Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. ओके, इसका दिल बाहर निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे। The killer left the heart right next to the body. ओके, वापस केस बोर्ड में चलते हैं।
और जितनी भी हमें इमेजेस मिली है हमें शायद यहाँ पे लगाने हैं। तो सबसे पहले हार्ट फाउंड नियर द विक्टिम्स, कार्गो स्ट्रैप्स। ओके, 3 इमेज हमें मिल चुकी है। Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. ओके, But this time the heart and the straps were left behind. यानी More जो clues to work पहले with. जो मर्डर्स हुए थे वो This भी makes सिमिलर 4 थे इसके murders जैसे, that we सेम। know about. यानी किलर सेम है दोनों मर्डर्स का। यहाँ पे एंटर करते हैं हम लोग। यू कैन चेक द अपडेट गोल्स बाय प्रेसिंग लेफ्ट कंट्रोल। ओके, ऑलराइट। अभी हमें क्या करना है? इन्वेस्टिगेट द क्राइम सीन। ओके, हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी है वहाँ पे। लेट्स गो। Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. नीड टू फाइंड मोर क्लूज। ओके, यहाँ पे एक क्लू हमें मिल सकता है। चेक कर Large लेते amount हैं। of blood on the table. लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड। The victim died here. ओके, यहाँ पे फुटप्रिंट्स हैं आई थिंक बहुत सारे यहाँ पे पैरों के। यहाँ पे भी चेक कर लेते Multiple हैं। people were here. ओके, Multiple killers? मल्टीपल किलर्स। हाँ यार, वो 3-4 तो थे ही जो कल्ट ऑफ द ट्री कर रहे थे वहाँ पे। एक मिनट को, ये क्या है? Someone was drinking beer. They spent Okay. time here, waiting. ऑलराइट, यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है शायद। Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. ओके, ट्राइपॉड है ये। Was it for a camera? वापस हम लोग केस बोर्ड में चलते हैं और यहाँ पे जो भी हमें इमेज मिली है यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं हम लोग इस केस को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। मल्टीपल सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स। ओके, ये मल्टीपल सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स किलर के होंगे, तो हम लोग किलर वाले सेक्शन में लगाएंगे इसको। ओके, और क्या है हमारे पास? हैवी ब्लड स्प्लैटर ऑन द टेबल। ब्लड शायद विक्टिम का था ना, ये किलर का ही लगाना है हमें। Think. नहीं नहीं नहीं, हमें किलर पे ही लगाना है, तभी हम लोग किलर को ढूंढ पाएंगे। Boot prints, indicating multiple killers. ओके, Quite the party. और भी क्लूज ढूंढने क्या हमें? एक मिनट को, यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं यार, ये तो गार्बेज है। बाकी ये ओके, इससे बात करनी है मुझे। हैव यू आइडेंटिफाइड द विक्टिम? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. ओके, I haven't heard a word about him since. नाइटिंगेल नाम है इसका। Until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. ओके, क्लूज कैन बी डिस्कवर्ड बाय स्पीकिंग टू द पीपल। ओके, मुझे कोई क्लू भी मिला है, एक बार चेक करता हूँ मैं केस बोर्ड में जाके। टर्न विक्टिम इज अ रॉबर्ट नाइटिंगेल लास्ट सीन इन ब्राइट फॉल्स 13 ईयर्स अगो। ऑलराइट, ये मुझे किलर के सेक्शन में लगाना है क्या? That's not right. दैट्स नॉट राइट। विक्टिम ओके, विक्टिम के सेक्शन में लगाना होगा मुझे। ओके, और भी कुछ है क्या? फॉर लेटर ओके, हमें ये लेटर यूज़ के लिए रखना है। और भी क्लूज हमें ढूंढने होंगे। Yet. Okay, what happened after he got fired? So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Alright, इससे तो मैंने बात कर ली है, बाकी I think that's everything. For now, at least. ओके, हमने सारे क्लूज शायद ढूंढ चुके हैं और बाकी एक बार केस बोर्ड ओपन करनी है शायद मुझे। ट्राइपॉड फाउंड नियर बॉडी, ये भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। Huh. और क्या है? कूलर एंड बॉटल लेफ्ट नियर बाय। ओके, ये भी लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे। They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now?
Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. ओके हम लोग प्रोफाइलिंग करेंगे अब टेबल पे, तो लेट्स चेक इट कैसे होता है। वेपन अपग्रेड का हमारा इधर है। ओके ऑलराइट, बाकी प्रोफाइलिंग करनी है हमें, तो जल्दी से करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। ओके मिसिंग पर्सन, रिचुअल मर्डर। पहले मिसिंग पर्सन देख लेते हैं हम लोग। Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. ओके It's dark. नाइस। He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. ओके मिसिंग पर्सन हमने देख लिया, ये वाला सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. ऑलराइट हमने प्रोफाइलिंग कर चुकी है नाइटिंगेल की, तो अब दोबारा से हम लोग बैक चलते हैं। ओके हमें और भी चेकिंग्स करनी है इस एरिया में, तो केसी हमें पता नहीं कौन से लोकेशन पे लेकर जा रहा है। Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is आगे से तो रास्ता बंद है, कहाँ जाना भाई? Seems pretty complicated to me. ओके एक मिनट रुको, सामने कुछ है। What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. रुको यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। That's a question. ये क्या है? Tracks. Barefoot. ट्रैक्स barefoot। Nightingales. They come out from under the boulder. Makes no sense. I didn't know. यहाँ पे भी कुछ There's पेज a पड़ा piece है, of paper on the ground. पेपर पड़ा है कोई नीचे शायद। A page full of text on one side. Not a printout. Written Okay. with a typewriter. टाइपराइटर से लिखा हुआ है इस पेज पे। Lines scratched out and edits added with a pen. ओके Like a manuscript. Page of a मैन्युस्क्रिप्ट। story. The killer left a message. ओके जो किलर है उसने हमारे लिए कोई मैसेज छोड़ा है। It's for us. The text is about us. व्हाट? The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. ये लेटर हमारे लिए लिखा And गया then है। there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they Okay. not accept? Even if they knew it would end up hurting them. काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है Someone's स्टोरी been अब watching यहाँ us. से। Playing. Somebody sick is watching game us. with us. You were right. ओके This is right up my alley. Nightingale came this way. क्या किलर Either हमें he देख dropped रहा है this क्या? page, or the killers left it for us. मतलब किलर को I सब should पता है कि हम लोग क्या Nightingale करने about वाले हैं, this क्या नहीं page. करने वाले हैं। मैन्युस्क्रिप्ट पेजेस कैन बी रीड इनसाइड द केस बोर्ड। ओके वापस चलते हैं हम लोग। दिस पेज। We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. ओके I must find out what. हमें अब प्रॉपरली बॉडी के अंदर फाइंड करना है कि उसके चेस्ट में एक्चुअली में है क्या। उसके लिए हमें पूरे बॉडी का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा,
तो जल्दी चलते हैं। पहले मैं चेक कर लूँ F से केसेस। ओके, ये सारे केसेस हैं, यानी जो लंच बॉक्स में से हमें मिले थे और ये सब मिले थे। इसको बाद में देखेंगे। बाकी हम लोग यहाँ से बैक चलते हैं वापस। I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Hey, you made it back. ओके, हम लोग वापस उस लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पे I बॉडी hope है। you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. लेट्स गेट द बॉडी बैक टू द टाउन। ओके, हमें टाउन में लेकर जानी है इसकी बॉडी को। I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. ओके, Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh and Dear I've got Diner. a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. ओके, ये हमें कुछ सामान दे रहा है, इससे ले लेते हैं। Thanks. Return to Bright Falls. Take the car Let's back get the car. to the Bright Falls. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses. Okay. The bookers. ये बॉडी उठा के ले आएंगे, बाकी हम लोग कार लेकर चलते हैं जल्दी। Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds इसने good. मुझे जो की दी है, यहाँ से शायद मैं डोर ओपन कर पाऊँगा। आई थिंक सो। ओके, यहाँ से ये शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, गेट ओपन हो चुका है। ओके, Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, गलत जा रहा हूँ, but फिर रास्ता बंद है क्या hopefully the सामने से? sheriff will be more helpful. Not a surprise. अच्छा, ऊपर की तरफ जाना है मुझे। Doubt that. लेट्स गो। हम लोग कार के पास पहुँचने वाले हैं आई थिंक। I'm यहाँ gonna पे go एक और check गेट something है। out. Be right back. Got it. ओके, शॉर्टकट की यूज़ करनी है मुझे। ओके, ये केसी कहाँ चला गया? ओके, आ रहा है ये। लेट्स गो। सही जा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे? ओके, इस साइड से जाना है। चल भाई। ओके, सामने हमारी कार खड़ी हुई है। ये तो पुलिस वाले की है। Here we are. ओके, ये रही हमारी कार। Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. लेट्स गो। I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. वॉक टू द डाइनर। ओ डियर डाइनर करके कुछ शायद रेस्टोरेंट या फिर कुछ है वहाँ पे, वहीं पे हमें जाना है। Diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our हम लोग witnesses टाउन में waiting. पहुँच चुके हैं। I कितना smell यार coffee. ब्यूटीफुल लग रहा है यार ये। ओ भाई, ये लोग कौन है? Just how much coffee have you had today, Charlie? भाई कॉफी का कॉस्ट्यूम पहन के खड़े हुए हैं ये लोग। No, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. लेट्स गो। Never enough coffee. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure I mean our float, will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float for sure. Oh dear. So I don't know what to expect. Cute. It is the finest. ओके, ओ डियर डाइनर। ओके, यही वाला रेस्टोरेंट है जहाँ मैं जाना था। Welcome to Bright Falls. It's nice to have you Okay. here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. ओके, इससे पूछते हैं, यू मस्ट बी शेरिफ ब्रेकर। Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help.
I was told there were witnesses. Okay. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, Oh no. dear, The Bookers diner. don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. Okay, I'll see what they have to say. Okay, अंदर Casey, शायद you विटनेस compare notes बैठे with हुए the हैं sheriff. तो इनसे शायद मुझे पूछताछ करनी है शायद. Let's go. अब वो अंदर की तरफ चलते हैं. We've looked through the case files you sent over, Okay. Sheriff. Have you यहाँ had पे any witnesses कौन हो सकते हैं? known victims go missing? Sure. But it's तो बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे. fast off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. Excuse me, hello, कोई है क्या? Yeah, that's exactly right. एक मिनट को. Are you the bookers? Okay, शायद यही हैं witnesses. जिनसे मैं बात करता हूँ. Still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Okay, इनकी बातें सुन के लग रहा है यही witnesses हैं. तो इनसे पूछते हैं हम लोग. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Okay, यही है Just witnesses. Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Okay, यहाँ पे दो ऑप्शन आए. Why were you at the Cauldron Lake? Can you tell me what you saw? इनसे पहले पूछता हूँ ये थे क्यों, क्योंकि ये विटनेसेस है. हो सके इनका किलर के साथ कोई ना कोई रिलेशन हो, तो इनसे पहले यही हम लोग पूछते हैं. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Okay. Perfectly legal. Can you tell me what you saw? इनसे ही पूछते हैं हम लोग. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Okay. Why do you think it was a cult? इनसे पूछते हैं. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was. Okay, वो कुछ बता रहा था, इस लड़के ने इसको रोक दिया बताने से. प्रोफाइलिंग करनी होगी. ओके, इन दोनों की हमें प्रोफाइलिंग करनी होगी. तो लेट्स गो टू द केस बोर्ड. द ट्री पहले देखते हैं हम लोग. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. ओके, ये लोग इसलिए नहीं बता रहे, शायद उनके पास कोई नेकलेस वगैरह मिला है, क्योंकि ये लोग राइटर हैं, तो शायद प्रमोशन वगैरह के लिए इन्होंने अपने पास रख रखा है. बाकी सेकंड ऑप्शन चूज कर लिया मैंने. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. ओके. बुकर्स जो थे उनकी हमने प्रोफाइलिंग कर ली, यानी वो सच बोल रहे थे. तो बस बखाली उन्होंने एक बात छुपाई है कि उनको एक नेकलेस मिला है, तो हमें उनसे लेना होगा. कि इनसे पूछते हैं कि इन्हें क्या मिला था वहाँ पे. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. नाइस. इसने नेकलेस निकाल दिया है. Told you not to keep that thing to me. ओके, 2 ट्रायंगल्स. ओके, इसको हम ले लेते हैं. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor.
Stick around town for now in case we have any more questions. ये कौन है? Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh God, Saga ये मैं Anderson. जानती है शायद. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. हमारी बेटी मर चुकी है, हमें पता नहीं है क्या? Oh, I know what this is. You're स्टोरी blocking out कंफ्यूजिंग हो रही है गाइस बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. ओके हमें लॉकेट भी मिल चुका है और बाकी मुझे इसका समझ नहीं आया यार, ये हमें जानती कैसे है? इसके पास जाके पूछ सकते हैं हम लोग. ओके, हाउ एग्जैक्टली डू वी नो ईच अदर? लेट्स गो. So Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. ओके, सीन एनीथिंग स्ट्रेंज अराउंड टाउन? Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. ओके, इससे ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है. यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं. All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're ओके गाइस, हम लोग यहाँ से अब जाने वाले हैं बॉडी का पोस्टमार्टम करने डायरेक्ट. Murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all हाँ, very उसको नाम भी weird. पता था उस लड़की को हमारा. मुझे नहीं पता है वो कैसे जानती है हम लोगों को. It's best not to take it personally. इसको खुद नहीं पता मतलब कि वो जानती कैसे है इसको. ओके, आई थिंक यही है पुलिस स्टेशन और यहीं पे आई थिंक उसकी बॉडी को रख रखा है इन्होंने. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as यहाँ soon पे as एक मैप है possible. जो कि देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है. Let's go. I'll be right. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Yep. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. ये पुलिस स्टेशन है इनका. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. ओके गाइस, हम लोग बॉडी के पास शायद आ चुके हैं यहाँ से और भाई बाहर नहीं जाने देगी क्या ये? छोड़ो, पता ना कुछ कहने लगी मुझे. वैसे हम भी एजेंट है यार, FBI हम लोग. ये अंदर शायद बॉडी पड़ी है. Okay. रुको. Let's take a look at our patient. ओके. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. बॉडी सामने ही पड़ी है. अब हमें शायद इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा. तो लेट्स गो. What was the cause of death? What other clues can the पहले body यहाँ पे give हमें me? चेक करना है. Aha. They did leave something inside his chest. ओके. इसके हेड के The पास body कुछ है. shows signs of being submerged in water post-mortem. ओके.
It doesn't add up. इसके हाथ पे भी This कुछ है. looks like text. यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है क्या? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. मुझे लग रहा है ये किलर नहीं बनाया है इसके हाथ में टैटू. Defensive wounds. He put up a fight. ओके, यहाँ पे इसका हार्ट रखा है बाहर. There's writing on here. Can't make it out. ओके, clues available. How'd they manage that? अब हमें शायद केस बोर्ड में जाना है और ये सारी इमेजेस लगानी होगी हमें. ओके, इलीगल वर्ड्स ऑन हार्ट. ये कहाँ पे लगाना है यार मुझे? ओके, रिचुअल राइटिंग्स. ये भी हमें शायद यहाँ पे लगाना होगा. ऑलराइट. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? ओके, उसकी चेस्ट में ज़रूर कुछ है जो कि किलर ने छोड़ा है, तो हमें जाके उसकी चेस्ट चेक करनी होगी आई थिंक. तो लेट्स गो. हम लोग वापस आ चुके हैं पोस्टमार्टम में. अब इसकी चेस्ट में शायद हम लोग चेक करने वाले हैं, तो लेट्स गो. ऑलराइट. ओके, इसको कुछ मिला है. भाई ये क्या है? ये कोई पेपर है शायद. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. ओके. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. भाई इसके पास दिल नहीं है और ये बस मारता है लोगों को. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. ओके, इसके पास और भी पेजेस हैं पुलिस ऑफिसर को. कुछ बुरा होने वाला है, मुझे फील हो रहा है ऐसा. No, wait. ओ भाई, गायब हो गया क्या ये? Sheriff? What the hell? ओ भाई, उठ के बैठ चुका भाई ये तो. बाहर से चिल्लाने की आवाज आ रही है. Didn't see her. Could not see into bright light. Could not see into the bright light. हमें ब्राइट लाइट के पास जाना होगा क्या? ओह भाई, दिस इज क्रीपी यार. भाई हमारे पास आ रहा है वो. भागना होगा भाई हमें यहाँ से. इवन वो ये लाइट है सामने. पेज सेट टू गेट इनटू द लाइट. मैं लाइट पे जा रहा हूँ. ट्राई टू स्टे इन द लाइट, अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड बाय एनिमीज. ओके, मुझे लाइट में जाना पड़ेगा जल्दी से. तो मैं लाइट पे आ चुका हूँ यहाँ पे. भाई सामने से आ रहा है वो. भाई सामने ही आ रहा है ये तो. ओ, मैं तो लाइट में था ना बेटे यार. लगता है मैं लाइट से बाहर चला गया था, इसलिए उसने देख लिया हमें. तो कोई नहीं, ट्राई अगेन करते हैं एक बार दोबारा से. हमारा गेम दोबारा से वहीं से स्टार्ट हो चुका है. इस बार मैं लाइट के अंदर ही रहना है भाई. रुको रुको, मुझे बीच में रहना. मैं पीछे की तरफ चला गया था, वहाँ पे लाइट नहीं है. रुको, आ गया वो. मैं लाइट में ही हूँ ना. ओके. He can't see me in the light. Okay. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Okay. Safe havens will restore some of your health. If you leave or attack from the safe haven while in combat, it will become temporarily unavailable.
ओके Go. ओके ओके, हमें जाना है शायद बाहर की तरफ। ओके वो ये क्या है? ओ यहाँ पे एक गन है यहाँ पे। भाई ओ भाई आ रहा है। कहाँ है इसका? मिस हो गए। तो भाई ये तो गायब ही हो चुका है। Vanished. एंड ऑफ द चैप्टर। ओके गाइस, यहाँ पे चैप्टर 1 एंड हो चुका है। इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी चैनल पे, तो आप लाइक करिएगा वीडियो को एंड शेयर करिएगा अगर आपको अच्छे लगे तो। और गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।